Let's start with the ethics. So here, the very first thing that we need to understand in terms of professional ethics would be what are the ethics and what do they mean? So business, so as we all know, the businesses actually operate in social and political world, and their businesses actually affect the lives and the livelihood and the environment. So the way they conduct their business actually has a direct impact on other people's lives. So business actually should be done in a way which is not harmful to environment, is beneficial to people, and is actually for greatest good. So now coming to the definition of ethics. So ethics is nothing but the application of values to the decision making that you can see on your slide. And what are the values? Values are honesty, fairness, respect, compassion, and responsibility. Now, when all of these values are applied in the decision making, so all of the decisions that are made will be ethical and as such will be for the good for everyone. Ethics actually come to the rescue that they conduct themselves in a way which is acceptable and desirable. Ethics should be formally incorporated into an organization's culture as part of company's code of conduct. So ये बोल सकते हैं इस बारे में कि से वो पूरी तरह से फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, ना कि इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट अ वर्ड और there is no written policy. There should be a written policy and it should be formally incorporated, and everyone actually should know what the ethics are for a particular group or company. Now, coming to the business ethics. So, business ethics refers to what the group actually defines as right or wrong. Is not something which is predefined, is actually defined by a specific group. So each company will have a different set of ethics, or the business ethics, or you can say business practices that are desirable or acceptable or considered ethical. So it is actually defined by the group. The business ethics should be incorporated into organizations culture informally as well. So as we discussed above, like it should be formally भी होना चाहिए. There should be a written policy, but ये informally भी होना चाहिए, meaning कि peer pressure के through, like ऑफिस में कोई ऐसा एक पर्सन हो सकता है जिसके बेसिकली उसके एक्शंस को लोग फॉलो करते हैं. कोई ऐसा है जो मीटिंग सही टाइम पे ज्वाइन करता है, और या फिर कोई ऐसा है वो कभी भी दे नेवर रिपोर्ट लेट टू द टू द वर्क. सो इस टाइप के लोगों को लोग फॉलो करते हैं, और वो बेसिकली इस टाइप के इंडिविजुअल्स पीयर प्रेशर क्रिएट करते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं. एंड देन सेम कैन बी डन फ्रॉम द इंडस्ट्री और द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो से एक कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो बहुत ही सस्टेनेबल वे में काम करती है. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टाटास, दे आर नोन फॉर देयर डोनेशंस एंड चैरिटी. सो जो भी कंपनीज उनकी इंडस्ट्री में होगी, समवेयर फील forced to basically make those charitable donations. So it's इस type से peer pressure काम करता है business ethics में. And the other side is the tone set by the management team. So first, of course, we have the formal incorporated ethics into the company, but then we also have the informal ways. Informal ways would be जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उनकी टोन क्या है एथिक्स को लेके. क्या वो चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हैं, या छोटे जो लोगों के जो बैड बिहेवियर होते हैं उनको किस तरह से कंसीडर करा जाता है, या किसी टाइप की कोई इंटेग्रिटी इशू होता है किसी का, लाइक किसी ने स्मॉल लेवल कोई फ्रॉड किया है उसको किस तरीके से देखा गया. सो अगर टॉप मैनेजमेंट एक सही टोन क्रिएट कर देंगे तो उसके बेसिस पे लोगों को इनफॉर्मल वे में एक आइडिया रहेगा कि ओके ये चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पर. उसी तरह से बिजनेस एथिक्स स्टैंडर्ड्स डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर्स. जैसे मैंने पहले कहा, कुछ कंपनीज पहले ही डिसाइड कर दी है कि ओके ये एक्टिविटीज हैं जिसको हम कहेंगे कि ये डिजायरेबल एक्शंस हैं, और ये हैं जो अनडिजायरेबल बिहेवियर्स है. सो जो पूरी प्रोसेस है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल को डिसाइड करने की, वो ही एक process है by which we actually define the business ethics for a company, and that's how it becomes a business ethics. So business ethics are defined. These are not, it's not like we just keep saying ethics but no one really knows what to do about it. There is a written or the formal policy, there is an informal way, the way, and
That's how we can say, okay, these are the business ethics. Now, business ethics actually guide the individual or group behavior by principles, values, and norms. So the principles are specific boundaries that should not be violated. So those are specific things defined. You have to be within this boundary. If you go after this, there will be actions against you because you've basically not respected the company's ethics policy or the ethical policy. Now, the values are nothing but the beliefs and the ideals that are socially enforced. So values would be इस तो इस तरह से सोच सकते हैं जैसे कि something is not legally required but you still do it. For example, offering your seat to elderly और किसी pregnant lady को भी अपनी seat offer करना. These are all the values. Norms are standards of behavior that are judged to be proper and acceptable. So norms is nothing but it's not principle but it's norm. So we can say for this particular industry, this is the norm. This is how they would do it. So that's the standard behavior for a particular company, and that's just to be proper or acceptable. Business ethics are different for different groups: accounting, marketing, and sales. For example, अकाउंटिंग में लोगों को स्पेसिफिकली बोला हुआ कि किसी भी प्रेशर के अंदर भी कोई भी अगर आपको कोई फोर्स करता है कोई भी नंबर चेंज करने के लिए या किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस करने के लिए जब तक उसका सफिशिएंट अप्रूवल नहीं है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो उनके एथिक्स डिफाइंड है। बट देन ऑन दी अदर हैंड अगर आप मार्केटिंग का सोचो, ऑन द मार्केटिंग पीपल विल बी टोल्ड ओके कि अगर जो आपका एड कैंपेन है या फिर जो भी एडवर्टाइजिंग है आपको इस तरीके से रखना है कि वो रेस्पेक्टफुल हो, किसी के सोशली और डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके, या फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टिग्मा वाली कोई चीज़ उसमें दिखा दी हो। जैसे कि आए दिन आप देखते रहते होंगे कभी ना कभी कोई ना कोई कॉर्पोरेट कंपनी टारगेट होती रहती है कि जिस तरीके से अपना एड प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक there have been many of such cases and then people target them and they basically say okay boycott them because उन्होंने उस चीज़ को respect नहीं करा और जो जो socially acceptable है उसके और desirable है उसके against गए। So हर एक डिपार्टमेंट का विद इन जैसे पूरी सोसाइटी में डिफरेंट एथिक्स हो सकते हैं लोगों के रिलेटेड, वैसे ही विद इन कंपनी हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने एथिक्स हो सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग में बताया मैंने, फिर सेल मार्केटिंग हो गया, एंड फॉर सेल्स हो सकता है कि जो भी एजेंट्स हैं वो ऐसे टैक्टिक्स ना यूज करें जो कि अनडिजायरेबल हो लोगों के लिए, लाइक उनको फोर्स करना या फिर उनके पीछे पड़ जाना, मल्टीपल कॉल्स करना, इस टाइप की चीजें जो एक्सेप्टेबल नहीं। सो despite the existing laws and codes and regulations, there will always be several external and internal factors that encourage unethical behavior. So let's talk about the unethical behavior. Unethical behavior होता क्या है actually? So अगर एक group ने define किया, this is what they consider the ethical behavior. Going against this will be considered unethical, or in a way which is basically taking advantage of an unethical situation. So can be categorized into individual level, organizational level, and outside the organization, or basically the external part. So from the individual point of view, employees actually come from different backgrounds and उनकी अपनी desires and motivations हैं. Therefore everyone comes with a varying level of temptations and unethical behavior. So basically सारे लोग सेम नहीं है, सबके अपनी अपनी पर्सनल और मोरल फिलोसफीज हैं, लोग जिनको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वो आपकी जो कंपनी की एथिकल पॉलिसी उसको ना फॉलो करके पर्सनल स्टैंडर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, लोग करते हैं ऐसा। सो एंड इंडिविजुअल्स रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट सिचुएशंस, दैट्स वन मोर थिंग। सभी लोग एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते सिचुएशंस को। सो उसकी वजह से भी चाहे आपके पास एथिकल पॉलिसी हो पहले से, फिर भी लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो अनएथिकल चीजें कर सकते हैं। एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, tone in which unethical behavior is handled. Basically मैनेजमेंट ने अनएथिकल बिहेवियर को प्रीवियस पास्ट में किस तरीके से हैंडल करा है। कोई ऐसा पर्सन है जो लीव, सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर, ऐसा कोई पर्सन जो एक दिन या पूरे पूरे हफ्ते काम नहीं करता और ऑल्सो मैनेजमेंट को ये भी नहीं कहता कि वो लीव पर था, मीनिंग कि उसने काम भी नहीं किया और ये भी नहीं कहा कि वो लीव पे था। बेसिकली उसने एक वीक का पूरा लोचा कर दिया। उस केस में मैनेजमेंट ने प्रीवियसली कैसे डील किया उसके साथ में? वाज ही टर्मिनेटेड या फिर किस टाइप की
पेनल्टीज उस पर लगाई गई थी। और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जब उसके बारे में देखें कि हाँ भाई ये लोग इस तरीके से इन चीज़ों के साथ डील करते हैं, तो अगर उन्होंने बहुत लाइटली डील करा होगा तो अज्यूम करेंगे कि दिस कैन बी डन, और ये कोई बहुत लाइटली ली जाती हैं बातें और कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो उस केस में पूरा जो एथिक्स है पूरा बिगड़ जाएगा उस कंपनी का, जो एथिकल एनवायरनमेंट है पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जो बैड बिहेवियर है वो कैसे टॉलरेट करा जाता है कंपनी में, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिपेंड कर सकता है कि उनके एथिकल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है। एंड आउटसाइड organization would be external pressure and influences such as competitors. So suppose we know हमारे competitors हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम अनफेयर मीन्स के थ्रू और अनएथिकल वेज के थ्रू ऐसी पॉलिसीज ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे हम उनके ऊपर कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकें। सपोज अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हाई है, जिसमें आप एक ऐसी लेबर यूज़ करते हो जो कि बहुत हाई चार्ज, मतलब लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, बट आप क्या फिगर कुछ एक कंपनी डिसाइड करती है कि हम अडल्ट्स को ना यूज़ करके चाइल्ड लेबर यूज़ कर लें उसके अंदर, जिसमें उनको बहुत ही कम पैसे देने होते हैं, तो उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की वो बिल्कुल कम हो जाएगी, तो उनको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी बिकॉज वो उसको कम प्राइस पे बेच सकेंगे। सो इस केस में बट जो वो प्रोसेस है चाइल्ड लेबर को हायर करके उनसे काम करवाने की, बट वो अनएथिकल है। सो इसलिए जो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से भी एक कंपनी ऐसा फील कर सकती है और अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। व्हाट आर व्हाट इज मॉरल एथिक्स एंड वर्च्यू? सो तीनों चीजें अलग होती हैं, पहली बात तो ये। सो एथिक्स, एज आई सेड बिफोर, एथिक्स आर डिफाइंड बाय ग्रुप, सॉरी, ethics are defined by group or the company or the industry. So this is not something which is predefined. A company, industry, or a group actually defines what ethics are according to them. But when you talk about moral actually comes from within an individual. So वो उस बंदे की पर्सनल ट्रेट है, जो उसकी मोरालिटी है, जो उसका मॉरल बिहेवियर है। सो जब इट्स बेसिकली वो पर्सन जो है वो पर्सनल पर्सनल प्रिंसिपल से चलता है, ना कि किसी एथिकल पॉलिसी के अंडर। सो मॉरल फिलोसफी और सेट ऑफ वैल्यूज रिगार्डिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सो उनकी अपनी एक सोच रहती है चीज़ों को लेके, ना कि वो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने डिसीजंस के लिए। सो ऐसे लोग मॉरल की साइड रहेंगे। सो एज यू कैन see here, so this is not defined by a group, while ethics are actually defined by a group. Morals are actually personal principles, or moral philosophy, a personal moral philosophy, while the virtue is focused on a person, is a trait of a person such as honesty, fairness. So when you talk about honesty, is related to a person, fairness, truthfulness, trustworthiness, कितना ट्रस्ट करा जा सकता है उस इंडिविजुअल को। सो अगेन फोकस इज ऑन इंडिविजुअल। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज वैल्यूज, सो ये वर्चुअस हो जाती हैं, इनको बोलते हैं हम वर्च्यू। सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स एंड मॉरल। एंड जो फोकस है इस चीज का वो पर्सन पे है, ना कि एक्शन पे। तो वो क्या करते हैं वो क्या नहीं करते वो एक सेकेंडरी चीज है, बट जो फोकस है वो इंडिविजुअल पर है, while ethics focus on the action. Now coming to the moral philosophies in ethics, so CMA USA पार्ट 2 के अंडर ये 5 तरह की मॉरल फिलोसफीज हैं जो कवर्ड हैं, और हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। टीलियोलॉजी, then second one is deontology, third is relativism, fourth is virtue ethics, and last is justice. Now coming to the first one, which is teleology. So teleology is actually focused on self-interest. So in this the focus is on the self-interest. Now इससे पहले हम इसके बारे में स्टार्ट करें, एक चीज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। We are talking about moral philosophy. We are not talking about ethical policy or ethical behavior. So those two are different, because moral philosophy can be different from an individual to individual, while ethical policy or ethical behavior is actually defined by a company or a group. So इस केस में हम इंडिविजुअल पे फोकस के इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो मोरल फिलोसफी है। Now, for teleology, the focus is on self-interest. Now, in case of teleology, action is morally right if it produces the desired result, or you can say the personal desired result. As long, मतलब जो आपका एंड रिजल्ट है, एज लॉन्ग एज वो हो जाता है, तो वो इट इज सेम टू बी मॉरली राइट। मतलब उससे आपको फायदा हो रहा है, आपके इंटरेस्ट में चीजें हैं, तो चलेगा। मतलब अपना काम बने, बाकी सब जाए भाड़ में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फोकस उस साइड का है। Now, now teleology can be categorized into two further categories, which is egoism. If a decision
maximizes the self-interest, it is seen to be okay or morally right. The other side is utility. Focus is on utility here. Utility, from the utility point of view, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आप क्वेश्चन बैंक में भी देखोगे काफी सारे क्वेश्चन है जो यूटिलिटी, स्पेसिफिकली इस मॉरल फिलोसफी से यूटिलिटी में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे पूछें कुछ. सो आपको ये लाइन ये यहाँ पे याद रखनी होगी कि it is actually concerned about greatest good for greatest number of people. So they can ask you, they can give you an example. Okay, in this case, this individual is doing something and their action actually benefits a number of people. So that will tell you, okay, they're focusing on utility, which is also a self-interest, but this is not just self-interest, but also concern about others' interest also. Now, the second moral philosophy on the list is deontology, or you can say this is also concerned about duty here. So what this philosophy believes is that this is respect for all, or respect of others, right? Meaning that in this philosophy, जो दूसरों के rights हैं उनको respect करा जाता है, and we try not to infringe on others' rights. Now, under deontology, the focus is on duty, and they believe that some things should just not be done, like don't kill or don't beat or don't harm others. These kind of things. The duty view actually. The focus is on motivation, and in deontology, the motive actually gives the moral worth. So you can see in case of the teleology, the focus is actually on the self-interest and end result, while in case of deontology, the focus is on the duty, and the motive actually gives the moral worth. So your duty is duty is the sole standard for ethical behavior, not the end result. The example would be, जैसे एक कंपनी जो डिओन्टोलॉजी में एक्चुअली बिलीव करती है, फर्स्ट थिंग तो यही होनी चाहिए, ये होगा कि अगर वो लोग अपने एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने में बिलीव करते हैं, रिगार्डलेस कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता. और एक कंपनी होगी जो सोचेगी कि किसी भी तरीके से बस हमें कॉस्ट कम करनी है, तो वो अपने बस कॉस्ट कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी, और वो उसको कम नहीं उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं करेगी. वाइल इन केस ऑफ डिओन्टोलॉजी, उनका ड्यूटी व्यू है, सो उनको ड्यूटी से मतलब है, उनका सोल स्टैंडर्ड मॉरल यही है कि हम बस जो रिक्वायर्ड है हमारी साइड से हम वो पूरा पूरा करें. सो इन केस वो अपना वर्किंग कंडीशंस को एक्चुअली इंप्रूव करेंगे, और कॉस्ट पर उनका फोकस नहीं होता. नाउ द थर्ड वन इज रिलेटिविज्म. नाउ इन केस ऑफ रिलेटिविज्म, द राइट और रॉन्ग डिपेंड्स ऑन ग्रुप कंसेंसस. सो द फोकस इज ऑन ग्रुप हियर. नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, द फोकस इज ऑन ग्रुप वैल्यू. सो जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी मॉरल फिलोसफी क्या है, उसके बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं. और उस ग्रुप का अगर कोई कुछ लोग छोड़ के चले जाएं और न्यू लोग आ जाएं, तो नई फिलोसफी बन जाएगी. सो देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, एंड देयर आर मल्टीपल मॉरल फिलोसफी, बिकॉज पूरा ग्रुप डिसाइड करता है क्या होना चाहिए. और ग्रुप का जो मेकअप है, द मेकअप ऑफ द ग्रुप में चेंज एंड एक्शन बिकम्स अनएथिकल, बिकॉज न्यू लोग आएंगे, वो सोचेंगे ओ नहीं नहीं नहीं, ये जो आप कर रहे हो वो अनएथिकल है. सो इसको वो कंसीडर करेंगे अनएथिकल, एंड वो उसको नहीं करना चाहेंगे. सो ये ग्रुप कंसेंसस पे फोकस करती है. द फोर्थ वन इज virtue ethics. Now, virtue ethics is focused on the moral character of decision maker, and that individual is actually not double faced or dogla, as you can say. So basically, they will not change, they will not change as per the situation. They will remain the way they are. So they are virtuous, they can be called virtuous. So such, the focus is on individual here. Like, the honest person will always tell the truth no matter what the situation is, so that person is virtuous. The last one is the justice. Now this moral philosophy focuses on the fair treatment for all, or the fairness. They're concerned about things should be done fairly for all. And if someone if they have been taken unfair advantage of, they should be compensated. That's what the justice is. That's what the justice system tells you. Now, there is one sentence that will help you to understand more about this, that the resources are actually limited and people actually can take advantage at expense of others. So justice is needed because resources limited हैं. लोग किसी का भी गलत फायदा उठा सकते हैं, तो जिसके साथ गलत फायदा उठा लिया गया, उसको सही तरह से जस्टिस होनी चाहिए उसके साथ में. So justice can also be justice has four other parts. The first one is the procedural justice, and it actually focuses on how justice is administered, or you can say the procedural justice. So
सीधी सीधा बोलें तो मतलब कि जिस तरह से प्रोसीजर लोगों के लिए अप्लाई होते हैं, मतलब कि जैसे कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, उस तरीके से जो प्रोसीजर है सबको फेयरली अप्लाई होने चाहिए. And the second one is distributive justice. The standard is that equals should be treated equally, but if people are not treated, if people are not equal, they should not be treated equally, which sounds a bit wrong, but is actually not. Let me tell you why. So what they are saying, suppose एक कंपनी जो 5 लोगों को हायर करती है, दोनों 5 लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, सो उनको इक्वल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए रिगार्डलेस कि और क्या चीज़ है. अगर एक कंपनी जो उनकी क्वालिफिकेशन पे फोकस करती है, बट उन 5 लोगों के बीच में कोई ऐसा भी अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी क्वालिफिकेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, सो दे कैन बी पेड मोर, और वो जस्ट होगा. ये ऐसा नहीं होगा कि बाकी जो 4 लोग उनके साथ में इनजस्टिस हो रही होगी, क्योंकि वो जो जो अदर पर्सन है वो डिजर्व करता है वो एक्स्ट्रा पे. So that's why it's known as distributive justice. Third one is the compensatory justice. It's simply that अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो they should be compensated. Just compensation is due to the injured party or the parties. And the last one is the interactional justice. It's simply that just the way that an individual deals with the other one, that's called interaction, of course. And then the interaction should actually be fair. For example, the way employees and management treat one another, meaning कि सपोज अगर आपके मैनेजर हैं, आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हो, आप उनको टाइमली अपडेट देते हो, सारा काम अपना अपना टाइमली सबमिट करते हो, तो मैनेजर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टाइमली अपडेट से उनकी साइड से. तो इस टाइप की इंटरेक्शनल जस्टिस होती है. बट इस केस में अगर एक पार्टी है जो वो सही तरीके से नहीं इंटरेक्ट करती, तो दूसरी पार्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा या उनके साथ में इनजस्टिस होगी, बिकॉज वो अपना काम टाइम पे कर रहे हैं बट जो अदर पर्सन है वो सही टाइम पे फीडबैक नहीं दे रहा है. Take you back to the syllabus. So I've covered moral philosophies and what the business ethics are and ethics are. In the coming lectures, I'll be discussing the other areas from this